काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे था, बट इस मोमेंट से ब्लॉग स्टार्ट करना थोड़ा और लगेगा, तो दिन के शुरुआत से चलते हैं। तो आज के लिए यह है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। देखने में थोड़ा सा टेस्टी लग रहा है, बट अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ ऑलिव ऑयल से ही बनाया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम में एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला, कि अगर मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाऊं जो 100% फिटनेस से रिलेटेड ना हो तो क्या आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। तो उसका रिप्लाई कुछ ऐसा था। तो ये देख के मुझे लगा कि अगर मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाऊँ जहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस है, थोड़ा सा मेरा लाइफस्टाइल भी है, तो शायद आपको पसंद आएगा। इसलिए आज का व्लॉग मैं ट्राई करने वाला हूँ, जहाँ पे जैसे मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ फिटनेस रिलेटेड, वैसा नहीं होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो बाहर जाने से पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर बाहर चलते हैं। हाँ गाइस, तो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है कि ईटिंग आउट आफ्टर लॉकडाउन। तो ये मेरा पहला जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ। आज मैं बहुत सारे जगह जाने वाला हूँ, चलिए दिखाता हूँ पहले मैं क्या खा रहा हूँ। तो आज के लिए द फर्स्ट 2 प्लेसेस आर डन।
आज मैं बहुत ज़्यादा खाने वाला हूँ बहुत दिन बाद। तो पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए एक जगह पे आया हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारी जगह आपको लेके जाऊँगा। चलिए देखते हैं। सो वेलकम टू द थर्ड लोकेशन गाइस। आज का जो मेरा व्लॉग है ईटिंग आउट आफ्टर लॉकडाउन, इसका ये थर्ड प्लेस है। लास्ट प्लेस बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आपको ये प्लेस दिखाता हूँ, उसके बाद आज का जो लास्ट प्लेस होने वाला है वहाँ पे लेके जाऊँगा। My dollars make it hurt. जो आपका खाना है वो आते ही एक्साइटेड मत होइए। सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए, स्प्रे हो या नॉर्मल सैनिटाइज़र हो, उसको यूज़ करने के बाद ही अपने खाने को कंज्यूम कीजिए।
गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।